So it's means it hurt me a lot. It hurts me a lot and lot. I used to cry sometimes. I used to cry in front of my dad. Like they used to call me Chinese. They used to call me COVID, coronavirus. You are bringing up coronavirus. Ladies and gentlemen, welcome to Slam Up Wrestling. Myself Supreet, and this is my interview with well-known Indian pro wrestler and CW star Divya Ale, where she talks about making the transition from being a professional dancer to a professional wrestler, her first time meeting the great Kali, her love for intergender wrestling, and she also talks about the entire landscape of wrestling here in India and what are her big plans in this whole wrestling business. But before that, if you are new to Slam Up Wrestling, then make sure to like, share, subscribe, and also turn on the captions, because I don't want to hear any complaints like, this was supposed to be an English interview, you clickbaited us, man. So you do all that fun stuff, and let's get down with the interview. So first off, Divya, thank you for doing this. We are finally doing it. Yeah, actually, welcome for that. But so, how you been, Divya, and how was the last year been for you? Uh, I'm good actually, and currently I'm at my home because it's my father' retirement. So he's completing his 60 years in a job. So it's his retirement. So we came home to celebrate it. Or I won't say it was bad because 2020 में मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं किया, but yeah, I have started that a YouTube channel जो कि मैं बहुत टाइम से अपना यूज नहीं कर रही थी. So I've started using it and I've earned a good amount of money and some fan following from that. Not some, but a lot of fan following from my YouTube channel. I was active on Instagram. So last year I won't say it was bad, but it was good. Only the problem was that I didn't had a much practice last year of my wrestling. I was off since June, and classes were almost off since March. And since March, I was not doing any classes. Only I was doing gym. And since June till December, I was to the ring, and I used to miss the ring a lot at that time. So it was a hard time for me for being away from the ring and being away from my wrestling practice. But overall, I would say it's like good enough, not so bad, because I know that people have lost their job, people have just suffered a lot in the lockdown time. But for me, I got so many new opportunity at that time. So you just returned to training now before this whole second wave came around, right? Yeah, on January 2021, correct, 2nd January 2021, I came back for training. So during that time, was CWE running some shows? Yeah, at that time CW was running some shows, and you can say like some Saturday match has means it was happening, and some matches were not happening because due to the public where like sometimes there were less public, and sometimes when there is a more public, we cannot do the shows like that because there is always a call. There is always a call from a police or someone. They used to say like, we cannot see so much of crowd here. We have some rules and regulations given by the government. So in order to follow that, the show was like, okay, you can say like a crowd was only 50%, even when the crowd was only the 50%. The show was going on, but still not much of crowd. Let's backtrack a little bit. So how did you get into this crazy world of professional wrestling? Actually, I've been a fan of professional wrestling, and means if you will say like not only WWE, but on my childhood time, I used to watch, you can say, Impact Wrestling when it was called Total Nonstop Action, that is a TNA. I used to watch the old matches of W3W because my grandfather, he's a big fan of Ric Flair, so he used to always tell me like there's a one wrestler, Ric Flair, you can watch Hulk Hogan, because at my time I used to see Undertaker, Triple H, Trish Stratus, everyone, and my grandfather used to tell, if you want to see the wrestling, you can see the wrestling of Ric Flair, you can go and watch the wrestling of Hulk Hogan. They are like a so good wrestler, Ultimate Warrior, and he used to always talk about them. And being a fan of Undertaker, I never used to miss any of the wrestling shows, whether it's the Raw, SmackDown, or anything. So I used to get very excited while watching it. And
I always wanted to be a wrestler, you know. I used to tell in my childhood time, Dad, one day I will be a wrestler, you know. And my father used to laugh because he know that I was in my childhood time, and children can speak anything. And I used to do the entrance with me, my sisters, even everyone in my family is a fan of wrestling. So me and my sister used to do the entrance of Jeff Hardy, Lita, and Matt Hardy because we are the three sisters, and we used to do that crazy stuff. I used to do D-Generation X uh, entrance, and Trish Stratus. I'm a big fan of her. So I used to try her move in the home itself. And I used to tell that one day I will be a wrestler. But because there is a lack of wrestling, I mean, people don't know the knowledge about it, and there was no wrestling school in India. So my father used to think that I want to go in the mat wrestling. And when I told him that I want this wrestling is not in India, this is a wrestling that is being performed in the USA and the other places. And if you want to be a wrestler, you have to go to the outside India. And for that, you know, because we belong to a middle class family, and I know my dad cannot afford that. So he, at that time, he cannot afford that. So he just told me that you should think about becoming an engineer, you should think about becoming a doctor, or you should go and pursue for an MBA. And I told, okay, so I have to quit the gym, but being a fan of a crazy, I was a crazy fan of wrestling because people used to think only about the WWE and the Impact Wrestling. I was the only one who used to know about the indie wrestling too. I used to talk about the different wrestlers around everyone. In my school time, my friends were the fan of WWE too. When I used to have a conversation with them, I used to tell, you know, even you know this wrestling, you know that there is a one coming NGPW, and there are so many Japanese wrestlers, and they used to say, what are you talking about? We only know WWE because WWE was famous in India. And after TNA Impact and many wrestling companies came, the people used to get to know about the wrestling promotion. But I know how die-hearted fan I was of the wrestling. This professional wrestling I have been watching since my childhood. My grandfather used to tell me the stories of all the old wrestlers. Uh, he's been watching for a long time, and he's been following that wrestling thing for the long time. So I know my family, I know me, who have grown up watching wrestling. I have started watching cartoon at my age of, I think, when I was in sixth class. At that time, Hangama channel and a lot of the channels came. I used to watch that. Otherwise, I used to bring the DVDs because we don't have the at that time there is a dick. There is no Dish TV. There is no Tata Sky. There is only a dick. So in used to watch the wrestling. So I used to bring a DVD, lot of the DVD. I think I had a collection of more than 100 DVDs and the CD. You can say I used to bring up WWE and the total non-stop action that was TNA. I used to bring up them. I used to watch a lot. So for me, stepping in this professional wrestling, I don't know. I mean, I was in dancing, and I was a very means how much I know. I've been a state level winner of the dance, and I was in the Terence Lewis Academy. I don't know what suddenly happened when I was in London, and I decided there was one tryout going on outside, and I was telling, hey, Steve, there's some open tryout of wrestling, and she told me, hey, you're a fan of WWE, go and try for it. I said, you know, I cannot even perform any of the thing what they do. उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब even a common people can go for a tryout for the WWE because I have seen the people like who were not in a professional wrestling but an athlete or a model. They even try for the bodybuilders. They even try for a WWE tryout, and because that was the I think some indie promotion of UK who was conducting a tryout, their open trial. I really wanted to do that, and when I discussed with my friend, like you know, I want to be a professional wrestler. I always wanted to be, and she told me, like, hey, listen, I have been knowing you since 2 years, and I know you can do it. Just go and talk to your parents and try it once. And when I came back to London, I talked with my dad, like, I have decided I want to be a professional wrestler. And my parents were shocked, especially thanks to my both the sisters. They have trusted me and they have told dad, like, let her try. She have tried everything, man. She want to go for the dancing. She went. We never went to the Mumbai. She have went alone in the Mumbai even when she was in class 12. She have traveled all alone. She know how to break the barriers and just go there. So let her try one time. And my father, I will very lucky to have a father like that. He told, okay, this is a, I won't say a last chance, but I would say if you want to go for a try, you can go for it. So I'm lucky to have a parents like that. I'm lucky to have a sister like that and a best friend like that who have encouraged me for this professional wrestling. So while you were having this conversation with your friends and families that yes, I want to be a professional wrestler, what was it a easy try or was it hard to convince them? Yeah.
I want to go. Actually, with my friend, it was not so hard because my best friend who is Gudiya Sharma, she's from Mumbai. We are professional dancers and we have danced in a lot of award shows and movies. We have done a lot of background dancing. So we were together and I used to tell her every time about wrestling, and she was the one who always used to encourage me कि अरे यार जा ना तो फिर क्यों मतलब क्यों यहाँ पे टाइम पास कर रही है आई नो यू आर अ गुड डांसर एंड मुझे पता है रेसलिंग में भी तू कर सकती है जस्ट जा एक बार ट्राई कर घर वालों से बात कर और घर वालों से बात करने में थोड़ा डर रही थी बिकॉज मैं आई हैव जस्ट choose a very different line from my graduation since my school time I used to dance I was in Bharatanatyam dancing I was in Kathak dancing so father is like because उस time जो MP UP I won't say only MP UP Delhi even all over India में एक माहौल चलता है कि आपको इंजीनियर और डॉक्टर्स बनना है okay rather than going for a sport you should be an engineer or a doctor तो वो बात करने के लिए मतलब अपने घर वालों से बोलना that you want to go in a professional wrestling or you want to go in a different field वो थोड़ा different था but मैंने अपने डैड से बात की थी कि I don't want to do studies I'm not into studies but my father told what you want so प्रोफेशनल रेसलिंग का तो एकदम टूट चुका था क्योंकि बाहर भेजा नहीं जा सकता था छोटी भी थी तब मैंने बात किया था कि आई वांट टू बी अ डांसर आई वांट टू बी अ कोरियोग्राफर मतलब मुझे डांस करना है मुझे अच्छे डांस फॉर्म सीखने So my dad only told me you can continue your dancing after graduation. I will give you a time. If you want to continue it in the graduation time, you can. But मुझे तुम्हारे मार्क्स चाहिए मतलब कि तुम्हारे मार्क्स में कमी नहीं होनी चाहिए and I will never say you not to dance. I will never say you not to go for the sport. I will encourage you for everything. But marks में कमी नहीं चाहिए. And I said okay. और फिर मुझे 2 टाइम मेहनत करना पड़ा मतलब कि डांस में मैंने अलग ध्यान दिया इसमें अलग ध्यान दिया और मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि सडनली व्हेन आई वाज सो हैप्पी कि मुझे बाहर जाना ही था तो मतलब मुझे जब लंदन का वीजा लग गया ना आई एम गोइंग आउटसाइड विद माय ट्रूप टू परफॉर्म अ डांस हमारा ट्रूप था 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ हम जाके बाहर डांस परफॉर्म करेंगे और रिटर्निंग के टाइम मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि अब मेरे को ये कहना था कि आई डोंट वांट टू डू डांस आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल रेसलर तो मेरे लिए एकदम डिफरेंट कि मेरे पापा भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक तो मैंने बोला पढ़ाई नहीं करनी तो फिर भी मैंने बीकॉम किया बीकॉम से मैं अपना डांस भी कंटिन्यू कर रही थी डांस कंटिन्यू करते करते मतलब मैं बीकॉम का पढ़ते पढ़ते ही मैं सिर्फ एग्जाम देने आती थी मैंने कॉलेज से परमिशन लिया था कि मतलब मैं बाहर रहती हूँ तो कॉलेज ने बोला था ओके यू कैन कम टू गिव द एग्जाम तो मैं मुंबई में फिर चले गई तो मैं इधर उधर करती रहती थी और पापा के लिए थोड़ा शॉकिंग था कि अचानक से एक मतलब डांस का लाइन छोड़ के तुम अचानक से प्रोफेशनल रेसलिंग में कैसे जा रही हो इवन एवरीवन हु वाज माय बैचमेट्स इन द डांस ग्रुप ऑफ टेरेंस पुलिस एकेडमी दे वर शॉक्ड बिकॉज आई वाज अ डांसर एंड उनको एकदम सडनली शॉक लगा कि ये अचानक से प्रोफेशनल रेसलिंग में कैसे चलेगी मतलब मोस्टली डांसर्स का जो होता है वो चले जाता है एक्टिंग लाइन में या डांसिंग में या कोरियोग्राफी में और मेरे लिए मतलब उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि मैं अचानक से प्रोफेशनल रेसलिंग के लाइन में चले गई तो सिस्टर्स लोग को मैंने बताया था उनको पता भी था उन्हें भी प्रोफेशनल रेसलिंग बहुत पसंद है तो उन्हें पता था कि या शी वांट टू डू दैट तो मतलब एक लक अच्छा था कि उन्होंने पापा और मम्मी ओके इफ यू वांट टू डू इट और हमें तुम्हें ऐसा लगता है तुम कर सकती हो तो गो फॉर इट Okay, so you have said that you are big into dancing and stuff, but and on that topic, so what is your favorite dance style you would that you like the most? I will say I love dancing Bharatnatyam. It is an Indian classical dance form, and you know it's present the Indian beautifully present the Indian culture. That dance form is so innovative, and I would say like people used to tell me this is I won't say it's a compliment or I won't say like मैं अपनी खुद की तारीफ कर रही हूँ, but people used to say you have a good thigh. At that time, they used to ask me, "Are you in the sports?" At that time, I used to always reply, "No, I am a Bharatnatyam dancer." You know, Bharatnatyam have to be performed in the half squat. That is dance form that you have to always perform in a half squat position. So I used to tell them like that I'm a Bharatnatyam dancer. That's why my thighs are good. So I love that dance form a lot. That is a beautiful dance form. I have learned a lot of dance form in which I always I respect that dance form and I just respect that dance. Does that explain your love for South India then? Yeah, exactly. They're so beautifully dressed. You know, I always love South Indians. Reason is that I will give you one example. At the festival time, I'm not sure it was Onam, I think. Yeah, there was a festival Onam, and I was in a KFC at Punjab.
So Punjab have a very different culture. And I've seen all the South Indians who were studying in the LPU, that is a lovely professional university. They came to KFC, and there was a lot of people, I think more than 70, 80 guys and girls were there who were coming and taking the stuffs and eating. And I saw them. I mean, they are the one who beautifully, they always encourage, they always welcome their culture a lot. They were wearing a good sari that they used to wear in their festival, and the guys were wearing that lungi. I don't know what that's called, drapes, and so nicely. They were just celebrating their festival in their Indian cultural dress, and that was so beautiful. And I have been in a South India, like Hyderabad. I have been there. I have performed a dance there, and I have performed a dance over. I have been there, and I have always seen them beautifully. They just represent their culture so beautiful, and they always keep their Indian culture at the top. So I just love South Indians. So, sticking to the topic of dancing, so what is the advice that you took from Terence Lewis while you were in his academy? Actually, when I was in Terence Lewis Academy, the dance form that I was performing was a ballet contemporary. He was into a contemporary dance form and ballet. You know, it's been a plus point for me to join the Terence Lewis Academy. Reason is that I have made a good friends, and even the best friend who is not in the Terence Lewis Academy, but she was in Mumbai. I had met her there, who have encouraged me for the professional wrestling. And in the Terence Lewis Academy, they make a dancer so, means you can say tough. Means if you will see the dancers there, they have a good abs, they have a good body structure. They are so, means they look so good. And reason is that good cardio, good strength training, and in the dance, your expressions, everything used to be good. Even when I went to Great Khalees Academy, and people used to ask me, "Are you into sports? Are you into sports?" I said, "Yes, I have been in sport, but I'm a professional dancer." And dance is also not only a cultural form, but not dance is not only a cultural form, but dance is also a sports. You can call it a sports, like you call a yoga a sports. So I always say the dance is a part of a sport. So when I was there was a teacher, my teacher, ECNHT, and he used to ask me, "Are you into yoga or any other form?" Well, because I've seen you performing a split, I've seen you performing a beautifully cartwheel. How can you do that? Because I have heard you have not been a sports much. At that time, I told I'm a dancer, and I have learned yoga too. And because I have been in a dancing, that made me very easy to learn wrestling. That is right. Actually, bump, I will say bump was hard for me to learn because a lot of pain I used to get. But एक कहते हैं ना वो पेन को सहने की शक्ति वो उसी से ही आई है डांस के थ्रू because डांस में भी काफी पेन सहना पड़ता था. I have fallen so many times being in a spot position. मतलब हमारे भरतनाट्यम टीचर तो स्टिक से हमें डांस सिखाते थे ना स्टिक लेके खड़े रहते थे. कथक टीचर अगर पैर में आपके वो थाप नहीं आ रहा है प्रॉपर आपको स्टिक पड़ती थी पैर में. तो वो चीजें मतलब डांस एक तरह से मैं बोलूंगी उसने काफी मुझे टफ बनाया कि मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आगे बढ़ पाई. और चीजें मेरे लिए सीखने के लिए प्रोफेशनल रेसलिंग में इसीलिए इजी थी बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज दैट आई हैड फ्रॉम द डांस आई गॉट फ्रॉम द डांस. So you have said in the past that no matter which field you were in, that you faced some type of people used to look you at like a stereotype. So how do you used to deal with those type of situations? I used to be a very quiet, I have always faced this thing. Means when I was in my school, people used to call me China Kamal. They used to call me Chow Ming, and very, very different names with a very different. I used to go to the market. People used to see me like if I was some type of alien. Even sometimes good things have happened, like I am going, and some of the people who have never seen a girl like me, they used to get excited. Oh, she's a foreigner, and you used to come and take a selfie with me. They're small children. They used to come and take a selfie. Can we take a selfie with you? And I was like, yeah, okay, you can take a selfie. And when I went to the college life is quite easy, but there was a guys, lot of the guys, and they used to call, hey Chinese, hey momos, they used to call me that stuff. Even when I went to the professional wrestling, even in the dancing time, you can say Mumbai is a place where people never see you like, okay, this is Chinese, this is such. But sometimes I used to face, like in a local train, people used to stare at me, the weird type, and like, who's she, where she's from. Even when I was in professional wrestling, I used to see in the YouTube the comments like, यार मतलब देखो मैं तो हिंदी भी बोल सकती हूँ, बहुत अच्छी हिंदी बोल सकती हूँ. I am मतलब कि even if you will see the people who are from Nepal, they cannot
चला गुड हिंदी, बट मैं अच्छे से हिंदी बोल सकती हूँ, तो अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि हाँ वो हिंदी बोल रही है. बट स्टिल पीपल यूज टू कमेंट, ओ वेदर शी इज फ्रॉम चाइना, खली सर आपने चाइना की लड़की हायर की है, कहाँ से लेके आई है. एंड जब नेपाल का, आई थिंक इंडिया और नेपाल का थोड़ा लड़ाई हुआ था ये लॉकडाउन के टाइम 2020 में, so at that time I have faced a lot of problem because I was using a Bigo Live. I got an offer like कि आप, so I said okay fine, I will be there. I used to use the Bigo Live and people used to comment me, hey go back to your Nepal, why you are here in India. And that stuff made me a lot, means मुझे इतना बुरा लगता था कि ठीक है क्या है, मतलब कई बार तो मेरी लड़ाई हो चुकी है कि मतलब कि दोबारा नहीं बोलना है इंडियन में. मतलब एक टाइम में रिंग में, इवन इन द रिंग, आई फील वियर्ड अबाउट दैट बट दैट इज द ट्रू. आई वाज इन द रिंग एंड देयर वाज अ स्मॉल किड, वो हमेशा मुझे चाइनीज चाइनीज बुलाते थे एंड मैं इग्नोर करती थी बिकॉज ओके आई यूज्ड टू इग्नोर इट. बट ओके व्हेन आई वाज इन द रिंग एंड एक बार ऐसे ही हुआ, दे यूज्ड टू कॉल मी ओके ए चाइनीज एंड दे यूज्ड टू टेल मी go back to your China coronavirus, they used to call me. At that time, I got so frustrated that I shouted in the ring, in the middle of my match, in the middle of Saturday's show. I shouted, I'm not a Chinese, okay? Don't call me again. I went down. I just went down there and I was about to beat him. But however, I have controlled, and that moment that Khalisa have told, okay, you are a heel. You are a heel performer and it's okay for a heel to perform like that. But please just keep a patience there. You have a, means your patience level is very good, so you have to keep the patience. So it's means it's hurt me a lot. It hurts me a lot and lot. I used to cry sometimes. To cry in front of my dad. Like they used to call me Chinese. They used to call me COVID, coronavirus. You are bringing a coronavirus. Even once in a Punjab, I was traveling with my friend for. I was buying some mask and sanitizer. One of there was some guys, and they told like. This Chinese people, they she that girl, इसके जैसे Chinese people के कारण इंडिया में COVID आ गया. So my friend got so much angry. He was about to fight, and I was like, just leave it, because my father always told, there's a people will say they have a lot of things to say, and they will tell you. It's your purpose to get, just ignore and go on your way, because अगर कहावत सुनी है, कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी अपने चलता रहता है. तो वो चीजें पापा हमेशा मतलब मुझे उसके लिए कहते हैं कि जस्ट इग्नोर करो. लोगों के कहने से हम नेपाली नहीं हो जाते, लोगों के कहने से हम चाइनीज नहीं हो जाते. इट्स ओके इफ यू लुक डिफरेंट, मतलब कि एक बोलते हैं कि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही हो अगर तुम डिफरेंट दिख रही हो तो. पीपल विल से, वैसे भी टीवी में बोलते हैं टीआरपी कोई एक ही बंदा ला के दे सकता है, जो टीआरपी देता है जिसका नाम है उसी का ही चलता है. तो इसी यही सोच के मैं मतलब हमेशा शांत रहती हूँ. ज्यादा मतलब आपा होने की आदत नहीं है, पेशेंस लेवल भी बहुत हाई है, ज्यादा किसी से झगड़ा नहीं है, ये नहीं है. तो आई यूज्ड टू बी क्वाइट. बुरा लगता है चीजें, बट लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. आई नो आई एम इंडियन, आई नो आई एम born here in India. My parents are from India. My grandfather has served Indian military in Indian military. So कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जैसा है ठीक है चल रहा है. So I think these type of experiences, make a person strong mentally. Yeah, exactly. So, so you finally, achieve your dream to, you finally start training in CWE. So tell me the first experience of meeting the great Kali. Actually, I just contacted CWA and I was about to meet them. And that time it was a Saturday show. So when I went there, so there was a guy, his name is like Masti Rajput. Yeah, his name was Masti Rajput. And I went there and with my father and told, we have came here for admission. And he said, आज admission नहीं होगा, Saturday show है. Saturday show को admission नहीं होता. अगर show देखना है तो ticket खरीद के अंदर आना पड़ेगा. और उस time थोड़ा ticket के prices चल रहे थे shows के. So मैंने बोला कि पर मैं बात करके आई हूँ. बोला किससे बात की हो? मैंने बोला आवेश एक मेरा फ्रेंड है भोपाल से, गुड रेसलर है. तो मेरा उससे बात हुआ. तो मैंने आवेश को कॉल किया एंड ही वाज, वो शायद अपने मैच की तैयारी कर रहा था और सैटरडे शो की तैयारी करवा रहा था. तो उसका फोन उसने पिक नहीं किया. तो वो मेरे को बोला नहीं आप आवेश को कॉल करना, वरना ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे. वहाँ पे फिर एक लड़की मिल गई मुझे सनी करके. तो उसने मुझे अंदर लेके गई. वो उसको बोली कि अगर वो एडमिशन के आई तो लेट हर गो. एंड देन खली सर को बोला, आवेश मिला, आवेश लेके गया खली सर के पास. एंड ही टोल्ड सर गर्ल आई है जो मैंने बोला था एमपी से. तो आ गया. And I have seen a huge big guy. He was looking like a monster. And I just went there and said, okay, good evening, sir. He said, good evening, come sit. And me and father was like, oh my God, he's that guy, that 7 feet tall guy from the WWE that we've been watching. He was looking so huge, so means
a big muscles, a big guy. He was really looking monster at that. So, as a teacher, is he hard sometimes or is he little soft spoken? No, no, no. He is soft when you are new. When you are new, he will be a soft. He will be very soft. He will like, okay, he will encourage you. Like, you are strong, you have to. But if when you get experience, he used to be very hard. He used to say only one thing. 3-4 साल हो गए ना तुम लोग को, बोले क्या कर रहे हो, ऐसी रेसलिंग करोगे, मेरा नाम डुबाओगे, अगर सिलेक्शन होगी डब्ल्यूडब्ल्यू तो मेरा नाम डुबाओगे. He used to be very hard at that time, but when you are in the starting period of time, you are in the beginners training, he used to be very soft, very soft. He used to tell you, like, if ever feel like quitting, just go and talk to him. He will say, no, you don't have to. Try and try until you get success, and I know you can. He always encouraged people, and every children, he have encouraged each and every children. And I was surprised to learn that you were actually called Chini Alia at one point. Is that true? Yeah, it's true actually. Because I used to look like Chinese, it's true, but Khalisa told to keep my name Chini. And I told him, like, it is an offensive word in a North India. It is offensive word for the people like me, like who are in Nepal or who have settled here in India. So it's an offensive word. Even my father, mother didn't like this word, like what they have kept your name Chini Alia. Why? So actually, he used to keep my name Chini Ale, but and then he thought about Alia. Then he thought Ale is my title, so he told, let's keep it Alia and keep it Chini. Then I told him, sir, it's very offensive because I know अगर वायरल हुआ ये सब चीजें तो मतलब मेरे पे दिक्कत आ सकती है. But he told me only one thing, बोले take it in a positive way. I'm not calling you Chinese, Chini. It's mean sugar, and I have always seen you like a sweet girl. I have always seen you like a soft spoken girl. So मतलब चीनी मतलब sugar और मीठा, तो तुम वैसे भी बहुत मीठा बोलती हो, तो इसलिए ये बताना सबको, ये बताना नहीं, जो मैं अपने अंदर से रख रहा हूँ, सीधे मेरा नाम लिखे बोलना. खलील सर ने मेरा नाम इसीलिए चीनी रखा because I am so sweet and I used to be a sweet in front of everyone. So उन्होंने मेरा नाम like he cannot keep it sugar Alia, so he keep it चीनी Alia. So, when was decided to, let's go with Divya only? Actually, when I have first I was studying with the Chini Alia, and Fulwana attack when came, and at that time I was in the video that Singam Dubey and Onu Bhaiya was speaking about the attacks and everything, and I was in the video, and I have some throat infection, so I started coughing, and the coughing was so loud that I went out from the video and went to my room because my coughing was not stopping itself. I had a viral infection at that time, and coughing. I was coughing continuously. So I have to left the video. For that issue, they have to reshoot the video. And then there's a comment when then video was uploaded in the YouTube. I got a comment, and that comment was so embarrassed. I felt so embarrassed. Like, how can people comment on you without knowing anything? They just commented, "Where is Chini Alia? She's not in this video. She's really Chinese." I have seen a lot of people commented that thing. Sir, Chini Alia kahan पे है, क्या वो चाइनीज है, क्या वो सही में चाइना को सपोर्ट करती है, हमें तो लगा वो इंडियन है, क्या वो चाइना से आई हुई है, शायद इंडिया में सेटल हो गई होगी. My heart a lot. I said just because of a one name Chini, I don't. So finally, I have decided let's just continue with my real name Divya, and maybe I thought maybe I will continue with the Alia too, but because there was already a WWE NXT superstar Alia, so that's why I have decided to go with my real name. By the way, Divya Ale sounds a lot cooler. Yeah, actually, that is a unique title, Ali. So, how did it feel to, become their CWE Divas champion, and what did it mean to you? Actually, it means a lot to me because that was my first official single debut in a Saturday night show. And I even didn't knew that I was going to be a champion. Or the last moment, I I got to know that I'm going to be a champion when a referee told me, okay, just go for your finisher, 1, 2, 3, and finish. I said, are you sure? He said, yes. He all have already told my opponent about this. And when I got to know this, and I was so excited. It's like a surprising win for me because I remember Gail Kim and the Page, they took their first Raw debut and they won the championship.
So it's like, for me, it's like creating a history in India, or that I have been in my first Saturday night singles debut and I won that championship. It's like a dream come true for me. I think बोलते हैं ना कि नीति को कुछ और ही मंजूर था. मेरा मैच राजस्थान में जेमी जेमसन के साथ था, जो कि मेरा पहला डेब्यू मैच होने वाला था ऑफिशियली, जो बोलते हैं एक प्रॉपर, क्योंकि मेरे जूनियर शो में काफी मैच हुए जो कि एक प्रैक्टिस मैच था, बट मेरे मैचेस अच्छे होते थे और कुछ लोगों के मैचेस अच्छे होते थे, बोलते उनको यूट्यूब में अपलोड किया जाता था. तो मुझे जेमी जेमसन के साथ मैच मिला था, जो कि वो एक्चुअली जो जूनियर शो थे ऑफिशियल डेब्यू था. तो जेमी जेमसन के साथ मुझे राजस्थान में मैच मिला था, सिंगल डेब्यू, एंड ओके, I have to get defeated on that. So I was like, okay, there's a big opportunity for me, because I was new at that time. और जेमी जेमसन के साथ मैच मिलना, मतलब I was so excited, but due to टाइम नहीं था वहां पे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो फाइनली मेरा मैच कैंसिल हो गया. काफी सारे मैच कैंसिल हुए थे, तो मेरा मैच भी कैंसिल हो गया, एंड आई केम बैक देयर फ्रॉम. मैं वापस आई, और सैटरडे का ऑफिशियल मेरा सिंगल एक डेब्यू हुआ, एंड डेब्यू में मैंने चैंपियनशिप जीती. तो वही कहते हैं, नीति को कुछ और मंजिल था, शायद था ही कि ओके, इनको मतलब सिंगल्स मैच में शायद चैंपियनशिप जीतना लिखा ही था पहले मैच में, तो इट वाज लाइक अ बिग ड्रीम कम ट्रू. So speaking about dream come true, so how did you know end up working with Raki Sawant, and did you have any hand training her for her CWE debut or something like that? No, I didn't had no, for any debut. I didn't had any role with Rakhi Sawant. I only had a role that when she get a beat in her ass from Rebel, I have to go and carry her out, and she's very fun loving. मतलब बहुत बहुत ज्यादा बोलने की आदत है उनकी, मतलब हंसाने की, बोलने की, बोलती ही रहती है, कभी चुप नहीं होती. मुझे अच्छा लगता है जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं. मेरी भी आदत है बहुत बोलने की. मेरे दोस्त लोग तो मतलब मेरा सुनते हैं तो वो ईयरफोन लगा लेते हैं, हाँ 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 सुन रहे हैं, ऐसा करते हैं. तो उसकी भी राखी सावंत की काफी आदत है. शी इज वेरी फन लविंग. आई नो शी, बोलते हैं लोग बहुत कंट्रोवर्सी करती है मीडिया में, लेकिन बोलते ही है कि मतलब कंट्रोवर्सी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा. एंड शी इज अ सेलिब्रिटी. सेलिब्रिटीज लोग के लाइफ में तो अगर वो थोड़ा सा भी कुछ करते तो कंट्रोवर्सीज हो ही जाती. दैट इज अ नॉर्मल थिंग. सो शी इज अ वेरी फन लविंग. और ट्रेनिंग में नहीं, मैंने तो ट्रेनिंग नहीं दिया था उनको. ट्रेनिंग खुद खली सर ने ही सिखाया था. इवन एक दो रेसलर्स और ने हेल्प की थी, बट खली सर हैव मतलब काफी बड़ा रोल था उनका राखी सावंत. एंड शी इज अ वेरी क्विक लर्नर, वेरी क्विक लर्नर. इवन यू रिमेम्बर व्हेन राखी सावंत और इसका केटी का एक वो हुआ था, डांस ऑफ हुआ था हिमाचल के शो, and she had to pin Katie from schoolboy 1 2 3. She was very very, मतलब कि उनको सिर्फ बोला गया आपको राखी सावंत ऐसे करके केटी को पिन करना है 1 2 3, और उनको दिखाया गया और राखी सावंत ने एक बार में कर लिया. इवन एट दैट टाइम ऑफ द बॉडी स्लैम व्हेन शी वाज टेकिंग इट फ्रॉम अ रेबल, एट दैट टाइम आल्सो, मतलब बॉडी स्लैम लेना मतलब नॉर्मल जो रेसलर्स नहीं होते, कॉमन पीपल के लिए कमर में झटका आ जाता है. मैंने भी जब स्टार्टिंग में लिया था तो मेरे भी कमर में झटका आया. So I will tell her she's very talented. She's very quick learner and she's talented. I like her as a person. थोड़े ज्यादा बोलती है बट बहुत अच्छा है, मेरे को entertaining लगता है. Isn't she a natural heel? She could fit very well in the wrestling business. I think मतलब एक तो हील भी नहीं, आप हील बोलो कुछ भी बोलो, मतलब उनको काफी कैरेक्टर्स आप दे सकते हो, हर कैरेक्टर में वो खड़ी उतरेगी. क्योंकि एक तो उनका प्रोमो स्किल्स, अगर आप बोलो कंट्रोवर्सी बोलो, कंट्रोवर्सी किन की ज्यादा होती है, या तो कोई बेवकूफी करता है तब होती है, या तो जो बहुत ज्यादा बोलता है वो होती है. एंड इन अ प्रोमो यू नीड समथिंग टू बी अ वेरी गुड. सो मुझे ऐसा लगता है अगर राखी सावंत को अपॉर्चुनिटी मिले टू बी अ WWE रेसलर, और या फिर आप WWE नहीं बोले, अगर नॉर्मल प्योर रेसलिंग CW या कहीं पे करना चाहे, आई थिंक शी कैन परफॉर्म रियली वेल वेल. So speaking about wrestling character, how would you describe your wrestling character or persona? Okay, so my wrestling character, I would say I call myself a real Indian beauty, because I call that because means you will say I'm a multi-talented. I'm talented in many things. This is how I explain myself even in a WWE tryout when I was giving my promo, and I told I am a real Indian beauty because I am a multi-talented. I was a ring announcer there. I was a backstage interviewer, and then I was in professional dancing. I used to sing, and I am an interior designer, uh, and I'm BCom graduate. In a professional dancing, I have learned so many dance forms, not only an Indian dance form but also international dance forms. And you can say like I've been in a different field. So मुझे कोई भी टास्क दिया जाए मैं वो करती. So
I call myself like a multi-talented. So this is what the Indian real beauty has been explained. Not only a beauty from a face, but you should be a beauty from your heart, beauty from your mind, and to statistic like 100% satisfaction. So I agree on that thing. So I will always say myself that Divya Ale is 100% satisfied, and you say like if I'm a real Indian. So I describe myself like that. So you also done some segments, some famous segments in terms of CWE, particularly some angles. So how was your experience doing those type of stuff? Okay, you are telling about the storylines. Yep. Yeah, storylines like I was enjoying my current storyline that was related to a girl leaving his boyfriend and going to another boyfriend. So I enjoyed that storyline. Even I enjoyed the storyline with the Raghudev and Prajapati. They were like Baba and one was Raja, and I'm going to them and asking for a help for every time. And my boyfriend used to come and beat them each and every time. And the next, when I came to this second storyline, I came to a storyline like I have left my old boyfriend. I have been with my new boyfriend. So I love that storylines because uh, there's a lot of storyline that you love, and for me, particularly if you will say which storyline I have loved, I would always say that Prajapati storylines I had loved a lot because I got the millions of views in that, millions. And people have commented so weird like Indian आदत होती है comment करने की. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं अपनी videos देखती थी मुझे खुद हंसी आता था because I was new at that time and Khalisa told me that I would like to put you in a storyline if you want to. So I said yes without thinking anything. I said yes because I know when you will be in the big platform, you have to work in the storyline. So it will be a great experience. So I said yes, and I got a millions of views from that storyline. I used to get a love from them. I used to get a hate from them. So वो चीजें मुझे काफी अच्छी लगी. But even मैं ये बोलूँगी कि ये वाली भी storyline जो अभी थी मुझे बहुत पसंद आया because being a heel, it's your job. It's your job to turn the people on you. People एकदम आप पे गुस्सा करना चाहिए, आपको देख के गुस्सा करना चाहिए. So I love that because when I was in the crowd with Jitu and people used to boo us a lot. They used to call us like, oh, she's a bitch, she's a bitch, that she have left her boy. मतलब ऐसे तो आता ही है मजा, लेकिन उससे मजा आता है जब आपके ऊपर पीपल एकदम टर्न ऑन करता है. यू विल से दैट कि तुम्हारा हील वर्क एकदम काम कर रहा है. इवन मी एंड जीतू व्हेन वी आर गोइंग फॉर टेकिंग सम थिंग्स ऑन द मार्केट, और वो जो बच्चे जो हमारा शो देखने आते हैं वो हमें देख लेते हैं, तो दे यूज्ड टू से ए जीतू लूजर, यू दिव्या लूजर, एंड आई यूज्ड टू लुक एट ओके बाय. It was So like a that is a big thing. Yeah, yep. I like bye. I used to be in attitude at that time also. I mean, I used to just give my heel gimmick. If I know I'm a heel, I'm working over that. And small children, they don't know about whether you are doing it as a script because they knew that you are like a bad person. So if they met you ever, like it is not like a key fan base, like hey, you are meeting your fans, but it is like someone who hates you are meeting you. I used to like, yeah, go bye. I used to be like Maris, and I love Maris, this thing. I used to do them, yep, okay, bye bye. So I love my storyline. It's been a great experience. I've been in a 2 storyline, and that is a great experience for me. So who comes up with these storylines? Is it Khali sir and team, or do they give the performers the creativity? You can do whatever you want. Actually, no. This is all the Khalifa come with the storylines, and he used to say, the storylines, I think this will work. And I have seen a lot of times जो स्टोरी लाइन हम लोग अगर बताते हैं वो काम करे या ना करे, बट खली सर जो स्टोरी लाइन बताते हैं उससे काफी मतलब ऑडियंस अट्रैक्ट है बिकॉज ही इज बीन इन WWE और उन्हें पता है स्टोरी लाइन कैसे काम करती है. So always खली सर. So tell us about your experience in the WWE tryout and what are the things that you learned there. Okay. And it was like kind of, I will say good, very good, and I will say मतलब थकावट वाला एक्सपीरियंस, काफी थक गए थे हम क्योंकि हम लुधियाना शो कर रहे थे और ट्राई आउट का एकदम ऐसा हो गया था कि हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज लुधियाना शो बहुत लेट खत्म हुआ था और बहुत ही ज्यादा अराउंड 10 o'clock खत्म हुआ था. हम 10 o'clock से वहां निकले थे. दिल्ली की हमारी अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock की फ्लाइट थी, तो हम लोग 5-6 लोग थे CWE से जो लुधियाना शो करके जाने वाले थे दिल्ली. तो हम रश किए हैं, रश करके गए हैं, मतलब
वो चीजें हमें याद आती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें उस टाइम स्ट्रगल पीरियड लगता है कि यस वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गिव अ ट्राई आउट। मींस हमें उसकी इतनी चाह थी उस ट्राई आउट की कि हम किस तरीके से ट्राई आउट में गए हैं। इतना बारिश हो रहा था लुधियाना शो में, इवन ईच ऑफ द रेसलर जो भी ट्राई आउट में गए उन्होंने उस बारिश में, रिंग पूरी भीगी हुई थी, ऊपर से बारिश आ रही थी, उसमें उन्होंने क्या बोलते हैं रेसलिंग परफॉर्म किया। रेसलिंग परफॉर्म करके सबने रिंग उतारा है मिलके। रिंग उतारने के बाद सब गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी इतने फास्ट चल रही है कि अराउंड 6:30 पे हमारी वहाँ फ्लाइट थी एंड वी रीच दिल्ली एट 5 o'clock। और बल्कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था उस टाइम कोविड का कुछ भी ऐसे कुछ लॉकडाउन नहीं था कि मतलब ट्रैफिक नहीं रहेगी, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तो उस टाइम हम गए, और जब हम गए वहां पे WWE ट्राई कैसे था, बोर्ड की बाहर कोई वेट कर रहा है, हम लोग गाड़ी में बैठे, दे टोल्ड अस यू आर गोइंग टू अ होटल, यू आर नॉट गोइंग टू अ वेन्यू, ओके सो गो एंड टेक अ रेस्ट एंड वी विल लेट यू नो। और हमें लगा कि हमारा आज का ट्राई आउट छूट गया। हमें लगा कि नहीं, फर्स्ट डे ट्राई आउट हमारा तो छूट गया। वैसे भी हमारा इंट्रोडक्शन पीरियड छूट ही गया था जिसमें एक मीटिंग होनी थी सबकी, तो वो तो छूट चुका था हमारा। तो हमें लगा फर्स्ट डे भी छूट जाएगा, आज ही होना था और आज छूट गया। बट अचानक से फोन आया WWE ट्राई आउट के वेन्यू से कि ब्रिंग देम हियर, डायरेक्टली ब्रिंग देम हियर। तो उन्होंने बोला सॉरी आपको डायरेक्टली ट्राई आउट के फील्ड में वहां ले जाया जा रहा है, आप लोग वहीं पर चेंज करिएगा। वी टोल्ड ओके। हम वहां पे गए, हमारी किसी की नींद नहीं पूरी हुई थी। आई थिंक देयर वाज मी, जीतू चौधरी, दिनेश, आर्या दी पांडे, दिव्यांशु पांडे, सूर्या, हाँ हम लोग सब थे। ओके तो हम लोग इतने लोग थे, 6 to 5 पीपल थे हम लोग। तो हम लोग में किसी की भी, हम लोग की नींद नहीं पूरी हुई थी। हम लोग उस ट्राई आउट में गए हैं और मतलब वहां खड़े थे, फिर उन्होंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी कार्डियो स्टार्ट हो चुका था और हम वहां पे खड़े थे एंड दे टोल्ड अस टू ओके कम। वहां पे पॉल आया और पॉल ने बोला कि चलो आप फॉर्म भरो, ये करो कि आप आ चुके, चलो उन्होंने साइन किया हमारे अटेंडेंस का। फिर हम चले गए मेडिकल टेस्ट में। फिर हम मेडिकल टेस्ट करवा रहे थे, जब तक उन्होंने हमें टी शर्ट दिया, मेडिकल टेस्ट हम करवा रहे थे, तब तक से कार्डियो पूरे निकल चुका था, पूरा कार्डियो खत्म हो चुका था। फिर रिंग सेशन चालू हो गया था कि आपको रोल्स करने हैं, बम्प्स करने हैं। तो हम ऐसे करते करते हम बहुत लेट हो गए और फिर हमारा आधे से ट्राई आउट चालू हुआ, एक तरह से बोलेंगे। कार्डियो की छूट चुका था, कार्डियो ऑलरेडी हो चुका था, 1 घंटे से ऊपर हो गया था, 1 घंटे से चल रहा था। हम लोग बिना कुछ खाए नाश्ता किए इतने बारिश में भीगे हम उस ट्राई आउट में गए थे। तो दैट फर्स्ट डे वाज बहुत स्ट्रगल था। और जब हम लोग इतने थक गए, ट्राई आउट खत्म हुआ, हम सोचे अब होटल में जाकर रेस्ट करेंगे। फिर हमें कॉल बोला गया कि वी आर गिविंग यू 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में आप सब तैयार हो जाओ और तैयार होके क्या बोलते हैं हमें आज क्रूज जाना है। लिटरली सब इतने थक चुके थे, किसी का मन नहीं था, सब चाहते थे कि हमें बेड मिल जाए और हम सो जाए क्योंकि हम इतने थक गए थे ट्रैवलिंग से। बट स्टिल हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। मतलब मैं अपने ट्राई आउट एक्सपीरियंस ये बोलूंगी, काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि मतलब कोई तुम्हारे लिए वेट नहीं करता। यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू हैव टू बी अवेलेबल एवरी टाइम। कोई आपके लिए वेट नहीं करेगा, आप लेट हो क्या, उनको अपना काम है, वो अपना काम करेंगे, खत्म। उनका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को खत्म करेंगे। वो काम लेट शुरू हुआ हो, जल्दी शुरू हुआ हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं। ये चीज मैंने देखा वहाँ पे। टाइमिंग बोलते हैं ना, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो मैंने WWE ट्राई आउट से बहुत सीखा। लोगों को मैंने बहुत गुड शेप में देखा है वहाँ पे। आई वॉज नॉट इन अ गुड शेप एट दैट टाइम। क्यों झूठ बोलना, मैं अच्छा नहीं लगता मुझे झूठ बोलना, तो मैं तो एकदम गुड शेप में नहीं थी। मैं तो एकदम नॉर्मली ऐसे ट्राई आउट मैं एकदम, मुझे टाइम भी नहीं मिला कि हाँ ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो। सिर्फ मैं अपना कार्डियो ही इंक्रीज करने में लगी हुई थी, बिकॉज आई वाज नॉट सो गुड इन कार्डियो। मैं अपने कार्डियो में ही ध्यान देने में लगी हुई थी। तो मैं इतने गुड शेप में भी नहीं थी जब मैं ट्राई आउट में गई थी। एंड आई हैव सीन पीपल वेयर इन द गुड शेप। ओनली प्लस पॉइंट फॉर मी वाज दैट आई वाज द प्रोफेशनल रेसलर, आई ऑलरेडी नो द रोल्स एंड बम्प्स। एंड सेकंड प्लस पॉइंट वाज दैट माय प्रोमो वाज गुड। तो प्रोमो स्किल्स मेरी अच्छी थी, so I was happy about that because they have appreciated me for the promo. So I was literally happy for that. Otherwise मुझे काफी कुछ सीखने मिला that if you want to go for the tryout, you should know the timing. It's very important. Second चीज, हमेशा available रहो. Third thing, listen to them. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और चौथी चीज जो बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलेगी, बी इन अ गुड शेप। एवरी टाइम यू गो, जस्ट बी इन अ गुड शेप, दे विल सी अ डिफरेंट करिश्मा इन यू, दे विल सी अ डिफरेंट। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इंडिया में इतने सारे एथलीट है, 125 करोड़ की जनता है इंडिया में, और उसमें इतने एथलीट है। कुछ तो डिफरेंट था कि उन 80 में आपको ट्राई आउट में बुलाया गया, कुछ तो डिफरेंट था। तो अगर उन 80s में भी आपको सेलेक्ट होना है तो आपको उन 80s से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। तो ये तो सीखने को मिला है वहाँ पे। So how did your wrestling session go while you were showing off your wrestling skills over there? That was I just don't want to remember that because क्या हुआ था कि it was not that girl's mistake.
actually, when Kenyan asked me that, Divya, will you wrestle? I was like, yes. And he told me, do you want to wrestle with some girls? Do you know any girls? Then I told her, I don't know about, but I think that two girls came from the wrestle squad. That was the Pooja and Meenakshi. So if they are coming for wrestling, Kenyan told me no. He told me, he just directly said me no, not, he nodded no. Like, no, they don't, their wrestlings are not so good. We cannot allow them. Then I told the name of Ritika. She was previously an ex-player of CWE, and then she joined RWE. So she was in CWE. So I have wrestled with her. So I thought she was doing RWE shows. So I told maybe her. At that time, Kenyan again said no. Then I said, okay. Then he told, okay, Divya, we will look out if we will get any opponent for you, or we will, let's see. I said, okay, Kenyan. And when that wrestling matches have happened, she forgot the match. She forgot in between the match, and that was so disappointing. I know if you are a lone wrestler, a lone active wrestler, I won't say the alone wrestler, but I would say a lone active woman wrestler there. And when you don't get an opponent, like a good opponent, you will feel bad, because it was the only one opportunity you are getting to showcase your talent, showcase your ring skills, showcase your wrestling talent. So it was a disappointment for me, but it was not her mistake, because she's been out from this wrestling a lot of months. I think almost 1 year she was out from her wrestling. She had not been doing a wrestling like I was active in the wrestling matches and she was not active in the wrestling matches. So it was not her mistake. I will say that was just a bad luck, but I felt it so bad. Otherwise, other skills were good, like other roles and the bumps. It was going really well. So back to CWE. So you are very well known for having mainly intergender wrestling matches. Any particular reason? Yes. Yeah. Actually, there are not a women wrestlers much there. There's only a few wrestlers. Like when I came there, Kavita Devi was selected in WWE, and Sunny Jat was there, who left in between. She left in between for the wrestling. She had went to the politics or something. And then Bibi Bulbul was there. She also left wrestling. And then Rita was there. She used to come less for the wrestling. Means I think she had some health issue and some personal problem, family problem. So she also not used to come for the wrestling. So when I won the championship, I used to sitting like, okay, somebody will help me? I want to defend this championship. I want to showcase my wrestling talent. If someone will be there. So you remember the Begum Jan. So that was a male wrestler who used to dress like a female and wrestle with me. I used to laugh a lot about that, because ठीक है चलो अब क्या करें, लड़ना तो है. At that time, I used to tell my teachers. I never went and back to Khalisa like I want a wrestling matches or that. But I told my teacher, I told just because there are the few women, how will I learn wrestling? I don't know. I just shared him like, I'm upset because I cannot do the matches. I'm upset because how will I improve my wrestling skills? How will I improve my matches skills? How will I get to know? I know means पता है मुझे experience है. एक बोलते हैं कि हाँ ठीक है पता है मुझे टैग टीम मैचेस में क्या होता है, मुझे पता है 6-man टैग मैच में क्या होता है. आई नो व्हाट इज द इंटरजेंडर मैच, आई नो व्हाट इज द मिक्स मैच, व्हाट इज द सिंगल्स मैच, सबके मुझे पता है. बट जब तक से करूंगी नहीं उसको, प्रैक्टिकली नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा? So that was my coach who finally decided, let's have a wrestling matches with the men. And I would really say Xavier Justice, his name is I think Joy Breed. So I know him like Xavier Justice, my coach. He have helped me for the wrestling with the guys. He told me, Divya, एक काम करते हैं, let's have intergender matches. ज़्यादा से ज़्यादा intergender matches करो. If you know Joy Ryan, I know I'm a big fan of Joy Ryan. I have seen him wrestling. He's been so amazing wrestler, so amazing. He's always been in character in every intergender wrestling. Sir बोले कि चलो आपको डालते हैं intergender wrestling matches में, and मैं देखना चाहूँगा तुम कैसे करोगे. And I started doing that. He loved it. He loved it because I used to perform really well with the guys. लड़कियाँ थी नहीं, लड़कियाँ तो फिर मुझे लड़कों के साथ ही करना पड़ता था. तो लड़कों के साथ करते करते जब YouTube में मैचेस चलने लगे तो उसमें काफी व्यूज आने लगा, काफी व्यूज. तब खली सर को लगा ओके हर इंटरजेंडर रेसलिंग स्टार्ट गेटिंग फेमस. फिर सर ने डिसाइड किया कि चलो सैटरडे शो में भी दिव्या के इंटरजेंडर रेसलिंग मैचेस रखते हैं. हमने किया वो काफी व्यू गए. एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू डू वन रेसलिंग मैचेस विद वन ऑफ द सीनियर्स. मैंने काफी सीनियर्स के साथ मैचेस किए थे, लाइक सिंघम दुबे के साथ मैंने किया था व्हेन ही वाज अ मेंटिस मैन, एंड कामिश के साथ किया था. तो
I decided I want to do with some seniors. And in my promo, at the promo time, I used to always challenge guys. Like, I always tell them, like, I know there are not less of female wrestlers here, but have a match with me, I'm available for them. I want to show them. I want to show them that a woman also are very powerful. So I used to always challenge them. So I got opportunity with a Pandey. I told him, like, I want to do a Thursday match with a guy. Please, Pandey bhaiya, if you can perform with me. And he told, first वो तो सोचे बहुत, क्योंकि होता है थोड़ा, मतलब कोई लड़की जाके लड़के से बोली मेरे को तुम्हारे साथ मैच करना है, तो कंट्रोवर्सीज इंडिया में तो नॉर्मल सी बात है, स्कूल टाइम भी होते थे, कॉलेज टाइम भी होता है, तो थोड़ा कंट्रोवर्सीज को लेके वो थोड़े परेशान थे, बट स्टिल ही सेड ओके. मैंने बोला कि मेरे यूट्यूब चैनल में चलेगा, आई एम नॉट सीडब्ल्यू के चैनल में नहीं डालूंगी, मुझे अपने यूट्यूब चैनल डालना, इफ यू कैन हेल्प मी फॉर दैट. आई सेड मुझे मैच करना है, अब मैं किसी से जाके बोलूं मेरी आपसे अच्छी बात होती है, तो आई थॉट इफ यू विल डू अ मैच विद मी, एंड ही एग्रीड. He finally agreed, and वो ट्राई के बाद का मैच, एंड आई गॉट अ मिलियंस व्यू इन दैट. So it was a really a plus point, and I was happy about that. और उसके बाद से मैं पहले से ही इंटरजेंडर रेसलिंग करती थी, पर जब पांडे जी वाला मैच बहुत ज्यादा वायरल हुआ, and at that time I got to know a new name, like okay, she's known for the intergender wrestling, लड़कों के साथ मैच करती है, she used to kick men's ass and everything, and फिर different type का लोग सर्च करने लगे, दिव्या versus men, Chinialia versus men. I can see a lot of search in the YouTube. So that is how I got famous from intergender wrestling. So on that topic, who are your favorite wrestlers to wrestle in CWE, men or women? I love wrestling with men because I wanted a woman, because I didn't get a woman of I want my level. But every time when I used to do a match, I used to get a new women because they used to take admission, and then they learn stuff like कि ठीक है चलो सिखाना पड़ेगा, लड़कियां कम है, लड़कियों को सिखाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ. तो मेरे लिए वो थोड़े न्यू हो जाते हैं, तो मुझे कुछ न्यू, मतलब मुझे कुछ अगर हट के करना है तो वो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज शी इज अ न्यू रेसलर. आपको उनके स्पीड के हिसाब से चलना होगा, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना होगा. बट द मेल रेसलर देयर आर सीनियर्स काफी हैं, उसमें काफी सारे हैं जो मतलब मेरे साथ ही एडमिशन लिए थे, तो उनके साथ वर्क करना इज लाइक रियली अ डिफरेंट थिंग. बिकॉज पहली बात तो आई वांट टू डू अ हाई फ्लाई, एंड I am a weighted. I'm weighted around 69 kg. So for a woman who are having a less weight than me, like mostly wrestlers, जितनी female है, एक दो को छोड़ के सबका weight मेरे से कम है. So you know, there are a lot of power moves that जो कि कम weight वाले लोग नहीं कर सकते. So I love to do even power move नहीं कर सकते, even a high fly. आपको किसी की बॉडी पिकअप करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, so they cannot do. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि अगर मैं मेल के साथ करती हूँ तो मैं हाई फ्लाई मूव डाल सकती हूँ, अदरवाइज मैं फीमेल के साथ करती हूँ तो ऑलरेडी ऑल द थिंग दैट आई हैव टू डू इज टू बिकम बेस. इफ दे विल डू द हाई फ्लाई, आई हैव टू बिकम द बेस. सो दैट इज द थिंग. तो मतलब थोड़ा ये हो जाता है कि फीमेल रेसलर्स मेरे से कम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं स्टफ वो चीजें नहीं कर पाती जो मुझे करना होता है, क्योंकि मेरे को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना पड़ता है. बट मेल रेसलर्स जो वहाँ पे हैं, अभी नए लड़कों को तो चांस मिला नहीं है, तो जो क्योंकि मेल ऑलरेडी बहुत सारे आते हैं, तो आपको पता है मेल्स को एक दूसरे को बीट करके आगे बढ़ना पड़ता है, उनसे बेटर परफॉर्म करना पड़ता है कि वो आगे बढ़ सके. और फीमेल वहाँ पे बहुत कम है, तो फीमेल को जल्दी मैचेस मिल जाते हैं, बट मेल रेसलर्स को नहीं मिलते. तो इसीलिए जो मेल जो सीनियर्स वहाँ पे हैं और जूनियर और जो मेरे साथ के हैं, मैं उनके साथ करने में मुझे अच्छा लगता है मैचेस, क्योंकि उन काफी स्टफ हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, हम अपनी अपनी मतलब स्टोरीज बता सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आई लव डूइंग द मैचेस विद द मेल. So who and are I'm your known for the intergender wrestling, so इसलिए और पसंद है. so who are your favorite performers to work with, have favorite to wrestle with? In CWE? Yeah. Okay, if I will talk about the CWE, I love wrestling with Bazigar. His name is Swapnil, and he's one of my good friend. I have wrestled with him 2 times. One time in a junior show, that was a triple threat tag match with me, Jay Jackson, and Bazigar. And one time, I have wrestled with him in a Saturday night show. And the crowd work that we got in that show was an amazing. अगर करंट सुपरस्टार की बात करें तो मुझे बाजीगर के साथ अगर दोबारा मैच मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी. और जैसे कि इफ यू विल से पुराने मैचेस की बात करें तो पांडे जी, जिन्होंने मुझे मिलियन व्यूज दिए हैं यूट्यूब में, मैं उनके साथ मैच करना भी जरूर चाहूंगी दोबारा से. Because people always used to comment on our matches, like when they'll get to see a rematch. या फिर पांडे जी आप कब दिव्या खराओगे, दिव्या तुम दोबारा पांडे जी को कब पिटाई करोगी, तो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं.
तो मैं पांडे जी के साथ भी अगर मुझे दोबारा रीमैच का मौका मिले तो आई विल लव टू डू दैट. So what is your status with CW right now? Are you in a contract, or if you are, does that allow you to work anywhere else in, at least in India? No, I'm not in a contract with the CWE anymore. I was in a contract in 2019, which was till 2020. Yes, till 2020, the contract was there. And now I'm no more in a contract with the CWE, but I am still a CWE wrestler because I have learned there. And that is like a temple for me. आप बोलते हैं जहाँ से आप knowledge gain करते हो वो आपके लिए एक temple होता है. So it is like a temple for me. I worship CWE. I worship the ring. I worship it a lot. तो अभी तो मेरे उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बट मुझे अलाउ है कि मतलब मैं दूसरे कंपनीज के साथ वर्क कर सकती हूँ. Only the thing is that I have to inform the Great Khali in the advance that at this time I will be not available because I'm working with them. And when I was in contract, I used to give him 25%. अभी तो कोई 25% ऐसा सीन नहीं है कि मतलब आप कहीं और करोगे तो you have to give your company 25%, but still मतलब डिपेंड करता है. अभी तो मैंने मतलब इतना बाहर वर्क भी नहीं किया क्योंकि कोविड आ गया था जैसे ही आपके ये खत्म हुए, तो इतना वर्क तो नहीं किया. बट स्टिल आई एम नॉट इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन एंड आई एम यू कैन से आई एम अ फ्रीलांसर. So are there still any plans to go overseas and wrestle somewhere? Yeah, actually I had a plan to go OVW, that is the Oyo Valley Wrestling. I have contacted a different academies and different wrestling companies if they can hire me or if they can do that, but the problem is that they cannot provide us the visa. But when I texted to the OVW, they told that you are very welcome here. We will love to keep you in our TV shows because you are from India, and first time from India, I think someone have approached them for coming to OVW. So they told that we have seen your wrestling matches and we will love to have you there. But the problem is that they cannot provide me the visa. So if I can manage the visa and come here, then they told they will surely give me a booking. They will surely keep me in the TV shows and they will love to work with me. So I was really very excited, but excitement का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि 2020 में कोविड आ गया और मुझे 2019 के 2020 के जनवरी में OVW से मेरी बात हुई थी एंड मार्च तक कोविड आ चुका था. So are you just trying for the promotions in US or other places like Mexico, Japan, or even a UK? No, I'm trying for everyone, like even in the UK. Even I have a conversation with my teachers who were my coaches. They told me if you manage to come US, even been in London, so if you can manage to go there, also we can tell the promotion companies to hire you. We will tell them they are my student and you can hire her for a matches. Even there is a one guy who has always been texting me on Facebook, like he used to book wrestlers. If he even told me, even if you manage to come to the UK, I can book you in many of the matches. But it is your responsibility how you can travel here because we are not so big company that we can provide you a visa. But even though if you manage to come to the UK, whether it's your study visa or a visit purpose visa, I will just talk to the companies and will give you some matches. So you have said in the past that you have a vision for wrestling in India. So seeing the current landscape in the wrestling scene in India, so do you want to do some changes or something like that? India, like indie wrestling is not here. There's not a big promotion here. Only people know CWE, Wrestle Square. Now HWE has opened. RWE was open. There was the AWE, I think AWE, yeah, Asian Wrestling Entertainment. Yeah, that was also there. But the most famous is if you know that is CWE. Second famous is Wrestle Square, and now HWE is also going famous. So indeed, there's a problem, lot of problem. Means I know there are a lot of wrestlers, bunch of wrestlers, but people don't hire the active wrestlers. अगर आप इंडी शोज कहीं पे करते हो, ठीक है, मानते हैं CWE के प्रॉब्लम है लोगों को, खुल के बोलूंगी, ग्रेट खली से प्रॉब्लम है लोगों को. प्रॉब्लम शायद पता नहीं, मुझे भी पता है ये सब चीजें, बट पर्सनल है थोड़ी, बट है, चलो लोगों को प्रॉब्लम है ग्रेट खली से, लोगों को प्रॉब्लम है
CW के रेसलर्स के एटीट्यूड से। दे थिंक दैट कि CW के रेसलर्स ऐसे हैं वैसे हैं, लोगों का कुछ पर्सनल इशू है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते या उसके साथ वर्क नहीं करना चाहते, इसके साथ वर्क नहीं करना चाहते। बट इनको ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि अगर प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस को आगे बढ़ाना, अगर तुम एक दूसरे से नफरत भी करो, एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहो, इवन देन अगर तुमको पता है कि वो बंदा एक अच्छा रेसलर है या वो बंदी एक अच्छी रेसलर है, तो उन्हें बुक करो शोज के लिए। इंडिया में टैलेंट ऐसे ही बढ़ेगा। तुम नॉन एक्टिव रेसलर्स को लिए जा रहे हो, आप नॉन एक्टिव रेसलर्स जिन्होंने रिंग में कदम नहीं रखा हो इतने टाइम से, तुम उनको रेसलिंग मैचेस के लिए बुला रहे हो, रेसलिंग मैचेस करा रहे हो। Okay, your matches are not so perfect, your moves are not so perfect. It's still, you're telling, I have been booked in this wrestling show. Okay, good, fine. We're happy for you. You are booked in that wrestling show. But active आप कब तक थे? 2 साल से आप एक्टिव नहीं था, अचानक से आके अपने रेसलिंग शो खेल लिया। फाइन, मैं नहीं बोलती, मैं एकदम जानती हूँ कि रेसलर, एक जो रेसलर है प्रोफेशनल रेसलर, वो काफी मेहनत करता है और वो रेसलिंग नहीं भूलता, अगर उनका गैपिंग भी हो जाए नहीं भूलता। बट स्टिल जो एक्टिव रेसलर मेहनत कर रहे हैं, फिर उनका क्या? आई नो लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, तो वो एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर स्टिल जो एक्टिव रेसलर है उनके भी पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो अपने ये जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं ना, उनको खत्म करके अगर लोग हैं अच्छे से लोगों को बुक करें ना, तो इंडिया में आई थिंक बहुत अच्छी जो इंडीज कंपनीज है ना, वो आगे बढ़ सकती है। इवन हम बहुत अच्छे इंडीज शोज कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इंडिया में जो ये जो करोड़ों की जनता है, इन्हें रेसलिंग पता है। इंडिया में आज भी सिर्फ 30% लोगों को पता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग इज स्क्रिप्टेड। दैट्स द रियलिटी, सिर्फ 30% ऑडियंस को पता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीजों का कि मतलब अपने पर्सनल ग्रजेस के कारण तुम अच्छे अच्छे रेसलर्स को छोड़ देते हो और उन्हें बुक नहीं करते। ओके, प्रॉब्लम हो सकता है कि चलो प्रॉब्लम ये भी हुआ है कई बार कि ग्रेट खली ने मना कर दिया कि इनको मतलब कि नहीं तुम नहीं जाओगे, ये नहीं जाओगे, लेट इट बी। अगर वो उस शो में नहीं आया है तो वो चीज वहीं पे खत्म कर दो, वो चीज वहीं पर खत्म कर दो कि चलो ठीक है, वो प्रॉब्लम तो नहीं आ पाया, एक बार हम और कांटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी को दोबारा पूछ लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, किसी की टैलेंट खत्म छोटी या बड़ी नहीं हो जाती। बोलते हैं ना लोगों को कि क्या बोलते हैं कि कब तक छुपे रहेंगे, मतलब कि जो टैलेंटेड बंदे होते हैं टैलेंट निकलता ही है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टिकटॉकर माइकल जैक्सन बाबा, who used to do a Michael Jackson dance. Okay, so how did he got famous? He got famous from a TikTok, and that's what I call a real talent. टैलेंट था उसमें, इसलिए वो टिकटॉक में फेमस हुआ, अपने टैलेंट के बल से फेमस हुआ, अपने डांस के बल से फेमस हुआ, बिकॉज ही यूज्ड टू डू अ सेम डांस लाइक माइकल जैक्सन, जो हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता, हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता। इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल से लोगों को देखा परफॉर्म करते हुए। तो टैलेंट ज्यादा टाइम तक छुपा नहीं रह सकता। तुम अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल लो, या तो तुम कुछ भी कह लो कि ठीक है चलो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, हमें ये नहीं हो रहा है। अगर तुम लोगों का ऐसे करोगी मैं उसको बुक नहीं करूंगा, तो उसका टैलेंट छुप जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनका टैलेंट है वो बाहर आएगा ही आएगा। द थिंग इज ओनली दैट कि मतलब अगर जितने भी इंडीज कंपनी है, अगर आप जैसे कि वो एक साथ मिलके काम करे ना, ऐसा मिलकर काम करे, बिकॉज इंडिया में भी काफी अच्छी अच्छी कंपनी, और इंडिया में स्पॉन्सर्स भी बहुत होते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने टैलेंट को शोकेस करोगे तो आपको बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। तो यू रिमेम्बर इंडीज ने एक WWE के खिलाफ शो किया था, ऑल इन, आई रिमेम्बर दैट इंडीज शो हुआ था ऑल इन, it happened in 2018. या एक्जैक्टली। तो वैसा शो इंडिया भी कर सकती है, बट ओनली द थिंग इज दैट थोड़ी ईगो इश्यूज लोगों को अपने संभाल के रखने पड़ेंगे, अपने पर्सनल ग्रजेस अलग करने पड़ेंगे, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ पंच ऑफ रेसलिंग टैलेंट, और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स है। द थिंग इज ओनली दैट कि हम यहीं पर अटक जाते हैं कि इसको शो में नहीं बुक करना, अगर ये शो में आएगा मैं शो नहीं करूंगा, और अगर इसके साथ खेलना है तो मैं बिल्कुल मैच नहीं करूंगा। तो ये चीजें थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे रेसलर्स इस चीजों के चलते बुक नहीं होते हैं। So, by the way, what are the personal goals for you, Divya, be in wrestling or something else? Actually, in a wrestling, I have decided something which has been हाँ WWE में तो कुछ भी हो WWE में तो जाना, ये तो मैंने पहले से डिसाइड WWE में जाना है। बट इफ WWE बाई चांस ठीक है नहीं होता सिलेक्शन, कभी कभी किस्मत की भी बात होती है, जो मैंने देखा है। अच्छे अच्छे रेसलर्स रह जाते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट रह जाते हैं। रेसलिंग एक ऐसा है कि जिसके लिए मैंने बहुत फाइट किया कि हाँ मुझे करना है, मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, किसी चीज में इतने टाइम से स्टिक हूँ, तो मैंने सोच के रखा है कि आई विल नॉट लेफ्ट इट। अगर बाई चांस ऐसा होता भी है, इफ आई
not get selected now, so I have a plan to move outside. मतलब मैं नहीं रह सकती एक जगह में, मतलब कि जब मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट है, बोलते हैं ना अपना टैलेंट एक ही जगह छुपा के क्यों रखते हो, शोकेस करो उसे। तो मुझे पता अगर मेरे पास टैलेंट है तो आई वांट वर्ल्ड टू सी इट, आई विल लेट द वर्ल्ड नो मी। और अगर मुझे WWE लेके गई तो दैट इज लाइक अ बिग ड्रीम कम ट्रू। अगर नहीं लेके गई तो आई विल मेक माई ओन गोल, आई विल गो आउटसाइड, आई विल लर्न देयर, I will make myself a best so that bookers will book me. They will book me for the matches, and then people will get to know even in the outside world, even in the indies too. So मेरा ये goal है और ये हमेशा रहेगा. So before we leave, Divya, I want to play a small game with you. So what I'm going to do is I'm going to throw you some names and you have to describe these persons in one word. Are you ready? Okay, I'm ready. So the Great Kali, Monster, Jinder Mahal, I would say a big muscles guy, a good body, good Indian, good body. I would just say good body. I have very nice body structure. Kavita Devi, Pride of India, women wrestler, first Indian female wrestler. Shanky Singh, One of my good friends. Ethan HD, My favorite teacher. and finally you, Divya Ale. Real Indian beauty. There you go, Divya. I really had a great time, talking with you and learned a lot about you. I think even the viewers will learn a lot about Divya the wrestler and Divya the person. Yeah, thank you so much, Supreet. Thank you so much. So before we leave, where can these guys find you? Okay, guys, so you can find me in a social media. In Instagram, you can follow me in a Real Divya Ale. So you will find by my name. Just search Real Divya Ale and you will get it. It is RealDivyaAale. And on a YouTube, just search Divya Ale and you will get my YouTube channel. So I'm going to repeat again. It was a great time, talking to you. And let's see if we can do this, person to person when everything gets normal. Yes, I will, surely. Thank you for the time, Divya. Okay, thank you.